For years, Pakistan's economy had stood at the edge of collapse. Rising prices, a falling rupee, empty reserves, and a nation losing faith in its economic future. But something has changed. As 2025 draws to a close, Pakistan's economy, after years of pain, is finally showing signs of recovery. Inflation is down, the current account is in the surplus for the first time in over a decade, and global institutions are once again calling Pakistan a success story in the making. So what's behind this turnaround? Is this real stability or just another temporary sign of relief? Let's break it down. I'm Makhdoom Shahabuddin and you're watching Trending Daily, where we separate facts from fiction and bring clarity to chaos. Ladies and gentlemen, for years, Pakistan's economy has been defined by crisis. From the rupee's free fall to skyrocketing inflation and political uncertainty. But in the late 2025, the tide finally began to turn. According to the latest IMF report and Pakistan Economic Survey, the country has entered a phase of cautious recovery. For the first time in 14 years, Pakistan's current account has recorded a surplus. Inflation, which was 26% last year, has dropped to just 4.7%. And after years of austerity, the state bank has cut interest rates from 22% to 11% to stimulate growth. These numbers may sound technical, but they represent something simple. Prices are stabilizing, confidence is returning, and Pakistan, for the first time in years, is breathing economically. In October 2025, Pakistan reached a new staff-level agreement with the IMF, unlocking $1.2 billion in funding. Of this, $1 billion comes under the Extended Fund Facility, EFF, a long-term program for stability, and another $200 million under the Resilience and Sustainability Facility, RSF, to support climate recovery projects. Once approved, Pakistan's total disbursement under these programs will reach $3.3 billion. The IMF has publicly praised Pakistan's performance, saying the economy is rebuilding confidence and stability. Mission Chief Iva Petrova noted that Pakistan's policies are on the right track. Finance Minister Mohammad Aurangzeb, who finalized the deal in Washington, said, "This agreement isn't about more loans, it's about restoring Pakistan's economic independence." That's a very bold statement, and one that shows Islamabad wants to move from dependency to self-reliance. Ladies and gentlemen, let's look at what the official data shows. GDP growth, 2.68% this year, slightly up from 2.5% last year. Per capita income increased nearly 10% from $1,662 to $1,824. Public debt down from 68% to 65% of GDP. Current account shifted from a $0.2 billion deficit to $1.9 billion surplus. These may not be revolutionary numbers, but they represent directional progress. For years, Pakistan was bleeding financially. Now it's healing. But this recovery didn't come easy. It came through discipline, through reforms, fiscal austerity, and painful corrections that ordinary citizens had to endure. But just when the economy started to stabilize, nature struck again. In mid-2025, massive floods devastated Sindh, Punjab, and Balochistan, affecting over 7 million people and killing more than 1,000. Farmland was wiped out, especially cotton, rice, and maize crops. Agriculture, which makes up to 24% of Pakistan's GDP, barely grew 0.56%. Its weakest performance in 9 years. But here's the remarkable part. Despite this disaster, Pakistan's overall economy stayed on course. Inflation stayed low, the rupee remained stable, and reconstruction began without massive new borrowing. The IMF and the government now agree that resilience and discipline must go hand in hand. If we talk about the industrial sector grew 4.77%, supported by small-scale manufacturing and textiles, even though big industries struggled. Meanwhile, the services sector, which drives more than half of Pakistan's GDP, grew 2.9%, driven by education, health, and government activity. On the governance side, the government achieved a primary budget surplus of 1.6% of GDP,
a first in years. A new tax policy office has been set up to simplify the system and ensure provinces get their fair share. But beyond the numbers and policies, what do the people feel? Are these reforms really translating into relief on the ground? Are Pakistanis beginning to feel this economic recovery in their daily lives? Or does it still sound like a headline from Islamabad? Let's hear directly from the public in tonight's Public Pulse. नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं ठीक हुए हैं। आप यकीन माने 30,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है और गुजारा ही नहीं हो रहा। और बिजली के बिल भी बिजली के बिल 10,000 20,000 बिजली का बिल आ जाए, जिसकी 30,000 सैलरी हो, अब वो बिल देगा या घर में राशन डालेगा या बच्चों के स्कूल की फ़ीस देगा? अब ये भी तो देखें ना। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कम से कम जो है ना, वो किसी लिहाज से, किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से कम से कम थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलना चाहिए गरीब को। अभी स्टेबल है, आगे का कुछ कह नहीं सकते कि क्या होना है। अभी तो स्टेबल है, कुछ अरसे से स्टेबल है। अब उसको पता नहीं कि प्लास्टिक से स्टेबल किया हुआ है, उसको मतलब कंट्रोल करके स्टेबल किया या कैसे किया, ये नहीं कुछ कह सकते, बट फिलहाल स्टेबल है। ठीक, थैंक यू। महंगाई मतलब कोई हद होती है ना महंगाई की। ये महंगाई अब सर से बहुत ऊपर चली गई है, ठीक है। और आम बंदे की तो कमर बिल्कुल तोड़ के रख दी है उन्होंने। तो सफ़ेद पोशी अब तो कोई का जो भरम था वो भी टूट गया। जो लोग गाड़ियों पे जाते थे ऑफिस, अब बाइकियाँ करा के जाते हैं। गाड़ियाँ उधर ही खड़ी हैं क्योंकि पेट्रोल कहाँ से लाएं। तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि मतलब आम बंदे की पहुँच से तो बहुत बाहर है। तो मज़े कौन कर रहे हैं? जिनको सारा कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है। जिन्होंने कमाना है उन्होंने टैक्स देने हैं। कोई बेहतरी नहीं मेरा भाई। 500 रुपये का टमाटर गरीब आदमी खरीद रहा है किलो, तो किधर बेहतर है? कौन सी चीज़ इस वक्त दुनिया की सस्ती है? गरीब मर रहा है मेरा भाई, पिस रहा है। मुझे 40 साल हो गए मजदूरी करते यहाँ पर, मैं बच्चों का पेट आसानी से नहीं पाल रहा। बड़ी मुश्किल है, दिन ब दिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है मेरे प्यारे भाई। इकॉनमी के हिसाब से इंडिकेटर्स कह रहे हैं, फैक्ट कुछ हो रहे हैं जो मतलब कि रियलिटी बेस आप मार्केट सर्वे कर लें, और जो नंबर्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं वो कुछ हो रहे हैं। तो जिस तरह आज के दिन का गोल्ड का रेट आप देख लें, 450+ चला गया है। तो बाकी डॉलर को आप देख लें, तो उस हिसाब से जो दिखाए जा रहे हैं वो और तरह के हैं, जो हैं वो और तरह के हैं। तो मेरा जो सिनेरियो जो मैं देखता हूँ इस सारे सिनेरियो को, वो डिफरेंट है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने मैंने रख दिए हैं। आवाम बेहतर जानती है कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। तो इसको जी इकनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उनको कटेर दिया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। तो अभी है कि अभी देख लें कि फॉरेन रिज़र्व हमारा जो है इस वक्त $13.2 बिलियन है, कि जो मतलब डिक्लाइन हो रहा है। तो बस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे फोकस करें कि जो अपने रिज़र्व्स हैं उनको बेहतर करें, स्टेबल करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। इकॉनमी के हवाले से इस गवर्नमेंट को जिस तरह हम देख रहे हैं पहले से ही, इनकी तरजीह मेरे ख्याल से इकॉनमी रही है, और इकॉनमी पे इन्होंने बहुत काम किया। डिप्लोमेसी को भी अगर देखा जाए तो उसी के साथ साथ मईशत पे इनकी पहले तरजीह है। इसहाक डार साहब को दे के, बाकी इनकी काबीना को दे के, हर तरफ अगर ये लोग घूम फिर रहे हैं तो हर जगह पर ये अपने फ़ायदे के हवाले से सोच रहे हैं, और अपनी मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाने में ये लोग शायद बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो बाकी गवर्नमेंट जिस तरह हमने दी कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, शायद बहुत सारे लोगों के जो अपने तरजीहात थे वो बहुत डिफरेंट थे। वो शायद मईशत नहीं थी, कुछ और चीज़ें थी। लेकिन इस गवर्नमेंट को जिस तरह हम देख रहे हैं, ये बाकी चीज़ों को भी टैकल कर रहे हैं और इसके साथ साथ मईशत को भी बेहतरी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक स्टडीज़ बता रही हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। लास्ट ईयर इट वाज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 2.5%। इस साल उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि वो 2.7 से 3% तक ग्रोथ करेंगे, विच इज़ बेटर दैन डिक्लाइनिंग। दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ डिक्लाइन कर रही है, पाकिस्तान की वाहिद इकोनॉमी है जो अपस्केल हो रही है, 2.7% पर चली गई है। गवर्नमेंट के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट ने 2 दिन पहले ऑल टाइम हाई किया था एज़ फार एज आई रिमेंबर, और 10% मार्केट ग्रो हुई थी। कल बीओपी ने, बैंक ऑफ पंजाब ने, दे डिड हाईएस्ट एवर ग्रोथ दिस ईयर, 10% ग्रोथ हुई थी इन 1 सिंगल डे। तो बीओपी इज़ डूइंग गुड। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो बीओपी इज़ डूइंग गुड, स्टॉक एक्सचेंज इज़ गोइंग गुड। Welcome back to the studio. The Public Pulse reflects both relief and realism. Some feel prices are finally stabilizing, while others say the change hasn't yet reached their pockets. But real recovery takes time, the groundwork is being laid, and its impact will gradually reach the people.
The year 2025 has been challenging worldwide. Global growth is slowing to 2.8%. Inflation remains above 4% and trade disruptions continue due to geopolitical tensions. Against that backdrop, Pakistan's 2.68% growth and sub 5% inflation look credible, even commendable. International observers from the World Bank and Reuters have called Pakistan's performance better than expected. But the key challenge is consistency. Policies must survive politics. Reforms must continue regardless of who's in power. Ladies and gentlemen, Finance Minister Mohammad Aurangzeb called this phase a bridge to self-reliance. He is targeting 4.2% growth next year, with tax reform, privatization and digitization leading the way. Pakistan is also deepening its strategic ties, engaging China for infrastructure and United States for trade and investment. This balanced approach shows a country trying to stand on its own feet, independent yet globally connected. So is Pakistan moving in the right direction? Yes, cautiously but surely. The economy is stabilizing, confidence is returning, and the world is taking notice again. The road ahead will be long, but 2025 may just be remembered as the year Pakistan stopped collapsing and started rebuilding. If you found this episode insightful, share your thoughts in the comments below. Do you feel this economic recovery in your life, or does it still feel distant? Don't forget to like, share and subscribe to Pakistan Connect for more episodes of Trending Daily for more deep dives into Pakistan's economy, politics and national affairs. Because understanding Pakistan means understanding its struggles, its resilience and its hope. I'm Makhdoom Shahabuddin, Pakistan Zindabad.